फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण माने समस्त को मो शरत एजुकेशन में स्वागत। एटा आ गोटे वीडियो हबो जोटा कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ऊपर किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा। फर्स्ट रहइबो हमरो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऊपर किछि क्वेश्चन रहइबो। देखिनवा फर्स्ट कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, a statement made about a population for the testing of testing purpose is called statistics, hypothesis, level of significance, test hypothesis. যেটা আমি টেস্টিং হাইপোথিসিস কোশ্চেন आंसर নিশ্চিত হাইপোথিসিস হবে। তো হাইপোথিসিস কোন কোচি এক্সপ্লেনেশন দেখো। হাইপোথিসিস ইজ এ স্টেটমেন্ট মেড अबाउट a population in general. It is the tested and a corresponding accepted if ट्रू and a rejected false. তাহলে আগুকু কোন যেতলা আমি টেস্টিং করিবা সেতবেলে accept হবো কি রিজেক্ট হবো, সে ট্রু হবো কি ফলস হবো সে আগুকু জানা পড়িবা। ওকে, সেকেন্ড क्वेश्चन देखो, if the assumed hypothesis is tested for rejection considering it to be true is called. If the assumed hypothesis is tested for rejection considering it to be true is called null hypothesis, statistical hypothesis, simple hypothesis, composite hypothesis. हबो ये हबो जोटा कि null hypothesis। जोटा कि null hypothesis कोन हुए rejected ही जाए। देखो, if the assumed hypothesis is tested for rejection considering it to be true is called null hypothesis। जोटा रिजेक्शन पई हमें कोन करंती ताको रिजेक्ट कर देबा पई ताको हम टेस्ट करंती। जो हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देबा पई टेस्ट करंती ताको हम कोन कहंती null hypothesis कहंती। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। इटा हम कोन हेल्प करे, एक्चुअल पैरामीटर कोन अछि पॉपुलेशन भीतर सेटा हमको से प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर, a statement whose validity is tested on the basis of a sample is called. A statement whose validity is tested on the basis of a sample is called null hypothesis, statistical hypothesis, sample hypothesis, composite hypothesis। এটা হবো কোন, এটা হবো statistical hypothesis হবো। এটা आंसर হবো statistical hypothesis। কোন কোচি দেখো explanation, in testing of hypothesis, a statement whose validity is tested on the basis of a sample is called statistical hypothesis। सैंपल बेस ऊपर हमें जो हाइपोथेसिस टेस्ट करंती ताको हमें कोन कहंती स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इट्स वैलिडिटी इज टेस्टेड विथ रेस्पेक्ट टू ए सैंपल। सैंपल लो एक्चुअल वैलिडिटी किनो ताको नै कि हम टेस्ट करथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहंती ए हाइपोथेसिस व्हिच डिफाइंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जोटा डिफाइन करथे ता कोन कहे जे null hypothesis, statistical hypothesis, simple hypothesis, composite hypothesis। ता कहबा simple hypothesis को आजे जब जोटा कि हम कोन कर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को से डिफाइन करता है। आंसर देखो सी देछि, द एक्सप्लेनेशन, ए हाइपोथेसिस व्हिच डिफाइंस द population distribution is called a simple hypothesis। इट स्पेसिफाई ऑल पैरामीटर वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चन, the null hypothesis is false, then which of the following is accepted? Null hypothesis, positive hypothesis, negative, alternative। ता आंसर डी होबो alternative hypothesis। हमें तळे hypothesis यूज करंती, गोटे null hypothesis यूज करंती आ गोटे alternative hypothesis यूज करंती। ओके, explanation, if the null hypothesis is false then the alternative hypothesis is accepted। It is also called research hypothesis। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, the rejection probability of null hypothesis when it is true is called level of confidence, level of significance, level of margin, level of rejection। এটা কোয়াজিবো level of significance কোয়াজিবো। the rejection probability of null hypothesis when true। যেটা null hypothesis টা আমি কেতে परसेंट नै कि हम रिजेक्शन करिया पे चाहती सेटा को significance level कोआ जाय। level of significance is defined as the probability of rejection of a true null hypothesis। the below this probability null hypothesis is rejected। okay, next कहला 7 नंबर देखो, the point where the null hypothesis gets rejected is called। जो पॉइंट रे हम null hypothesis रिजेक्ट कर दो ताको हम कोन कहबा, significant value कहबा, rejection value कहबा, acceptance value कहबा, critical value कहबा। ताको हम कहबा critical value कहबा। जो वैल्यू ऊपर हमें null hypothesis को रिजेक्ट कर दियंती सेटा को कोन कहबा critical value कहबा। the point where the null hypothesis gets rejected is called critical value। it is also called a dividing point for the separation of a region where hypothesis is accepted and rejected। it is also called a dividing point for the separation of the regions
where hypothesis is accepted and rejected. Next question देखो 8 number question. If the central if the critical region is evenly distributed, then the test is referred to as two tail, one tail, three tail, zero tail. কোটা হবো আমরা, এটা হবো টু টেল আনসার। থ্রি টেল কিছু নাই, জিরো টেল কিছু নাই, ওয়ান টেল ଅଛି। ওয়ান টেল ମାନେ ওয়ান ସାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, ଟୁ ଟେଲ୍ ମାନେ ଟୁ ସାଇଡ୍ ରୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ବୋଥ ସାଇଡ୍ ରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଇଫ୍ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ରିଜନ ଇଜ evenly distributed, then the test is referred to as two tail test। এটা কোন କହିଲା ଦେଖ, in two tail test the critical region is evenly distributed, ମାନେ evenly ମାନେ both side, ଏପଟେ ଯଦି 5 ହେଲା ସେପଟେ 5, ଏପଟେ ଯଦି 2 ହେଲା ସେପଟେ 2 ହବ। One region contains the area where null hypothesis is accepted and another contains the area where the rejected। ଗୋଟେ ସାଇଡ ନେଇଥିବା କଣ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ନେଇଥିବା ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖ 9 number, the type of a test is defined by which of the following? The type of a test is defined by which of the following? Null hypothesis, simple hypothesis, alternative hypothesis, composite hypothesis। এটা হবো alternative hypothesis। The type of test defined by which the following মানে সেটা হবো composite hypothesis। কোন কହୁଛି দেখো explanation। Alternative hypothesis defines whether the test is one tail or two tail। ଏଠି one tail or two tail କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦିଟାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି alternative hypothesis define କରିଥାନ୍ତି, testing କରିଥାନ୍ତି। it is also called research hypothesis। it is ଆଗ ଆଉ ଗୋଟେ ନା କଣ ତାର ଅଛି research hypothesis କୁହାଯାଏ। 10 number question ଦେଖ, which of the following is defined as the rule or formula to test the null hypothesis? Test statistics, population statistics, variance statistics, null hypothesis, null statistics। answer habo test statistics। which of the following is defined as the rule of formula to test a null hypothesis? ता कोन कहबा test statistics कहबा। okay, test statistics provide a basis for testing a null hypothesis। a test statistics is a random variable that is calculated from sample data and used in hypothesis testing। हम कहला ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, रैंडमली हमें गोटे वेरिएबल चूज करथांती दैट कैलकुलेटेड फॉर द फ्रॉम सैंपल डाटा। जो सैंपल का हम नैथांती से सैंपल ऊपर बेस करी ता कोन करथांती ता टेस्टिंग करथांती। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, कंसीडर ए हाइपोथेसिस H0 where consider the hypothesis where এটা হচ্ছে কোন null hypothesis equal to 0, null hypothesis equal to 5 against H1 where null hypothesis is greater than 5। the test is right tail, left tail, center tail, cross tail haba। कोन कहला explanation कोन कहला देखो, in the given example since H1 lies to the right of the H0 where the null hypothesis is test referred to as right tail test। कोन कहला देखो जेतु ता राइट साइड को अछि तेनुकुने राइट टेल टेस्ट कहजिवो। ओके, आंसर अब हमर ए राइट टेल टेस्ट आंसर। कंसीडर द हाइपोथेसिस H0 where null hypothesis equal to 5 against H1 where the null hypothesis is greater than 5, then the test is right टेल। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा 11 नंबर गला। 12 नंबर क्वेश्चन, consider a hypothesis where H0 where null hypothesis or where null hypothesis 23 against H1 where null hypothesis is smaller than 23, the test is right tail or left tail, central tail, कोटा हबा हमरा एटा हबो लेफ्ट टेल देखो। in the normal distribution curve of both the hypothesis the H1 hypothesis lie to the left of null hypothesis, hence the test is left tail। okay, 13 number, type 1 error occurs when type 1 error केतल हबो type 1 error we reject H0 if true। जेतले हमर H0 माने null hypothesis, H0 माने null hypothesis जतले ट्रू थिबो हम त कोन करंती रिजेक्ट कर देंती, सेतबेले हमर कोन होय टाइप 1 एरर होइता। आ जेतबेले टाइप 2 एरर केतले आसीबो हम कोन करंती null hypothesis कोन फॉल्स थिबो किंतु ताको हम एक्सेप्ट करतांती। null hypothesis जतले फॉल्स थिबो त एक्सेप्ट करतांती, एटा कोन कहजिबो टाइप 2 एरर। सेमति अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेले कोन हबो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भूल थिबो किंतु ताको हम एक्सेप्ट करता ताबो H10 सॉरी कोन टाइप 1 एरर हबो। आ जतले null hypothesis ट्रू थिबो ताको हम रिजेक्ट करथुवा, एटा हबो टाइप 2 एरर। ओके, देखो in testing hypothesis type 1 error occurs when the reject H0 if the true
On the contrary, a type 2 error occurs when we accept A0 if it is false. The probability of a type 1 error is referred as 1 minus alpha beta alpha 1 minus beta. Answer कौन हबो? Answer हबो alpha. Probability of type 1 error को हमें कोथरे देखंती alpha रे देखंती. Okay, और type 2 error को beta रे देखंती. Explain the type hypothesis. Testing type 1 error occurs when the reject A0 if it is true. The probability of A0 is alpha, then the error probability will be 1 minus alpha. The alternative hypothesis is called as a composite hypothesis, research hypothesis, sample hypothesis, and null hypothesis. Alternate hypothesis कौन है? Research hypothesis कौन है? Alternate hypothesis also called research hypothesis. It is null hypothesis. Is it false? Then alternate hypothesis is accepted. Okay. এই ভিডিওরে এতিটা কোশ্চেন থাও নেক্সট ভিডিওরে ଆମେ probability statistics hypothesis testing ର ଆଉ କିଛି क्वेश्चन କରିବା population mean ଉପରେ hypothesis testing कोन हबो ताको आउ थरे डिस्कशन କରିବା ओके धन्यवाद।